में जाता हूँ, I'm still professor in many countries. The first question people ask me is, why have you left allopathy for acupuncture? Allopathy is a very good science, without any doubt. That is modern medicine. But no science is complete. Each science has got some limitations, some indications. दुनिया में कोई भी कॉइन ऐसी नहीं कि जिसको सिर्फ हेड या टेल है. Each science, each medical science has got some limitations. Likewise, allopathy has also limitations. So I left. I thought that in allopathy we are treating basically symptoms. In most of the disorders we don't know the root cause of the disease. और हम जिंदगी भर पेशेंट को ट्रीट करते रहते हैं. This was the main thing I diverted from allopathy to acupuncture. Now coming to acupuncture, इसके extra advantages क्या है? Number one, it is a drugless therapy. So there are no side effects because it is a drugless therapy for a poor country like India. Poor बोलो या developing बोलो, underdeveloped बोलो, for underdeveloped country like India, it is a boon for common man where you can save money being spent on the drugs. So no cost, any minimum cost, no side effects. एलोपैथी में हम जो दवाइयाँ खाते हैं, मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ. एलोपैथी में हम जो दवाइयाँ खाते हैं, they are chemicals to a large extent that damage kidney and liver and many others. So ये प्रॉब्लम एक्यूपंक्चर में नहीं है. और सबसे बड़ा एडवांटेज एक्यूपंक्चर का जो है कि if you are expert, to be underlined, if the acupuncturist is expert in 5 elements, yin yang and other basic concepts, he can try to find the root cause of the illness and try to cure. Try बोल रहा हूँ मैं, cure नहीं बोल रहा हूँ. Try to cure the root cause of the disease. One of my, by the way, God has created this wonderful machine, human body. But remember, God has not created doctors. Doctor is man-made, human body is God-made. लेकिन God has made such a wonderful arrangement in the body that the body itself can take its own care. जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, and acupuncture points is a part of this system. I remember one of my students who is a MD physician, allopathic physician, Dr. Sunita Gupta. She asked me one question, कि sir, why do acupuncture points exist on the body? मैंने कहा acupuncture point इसलिए नहीं कि हम उसमें सुई डाल के ट्रीटमेंट करें, क्योंकि acupuncture was born say in last 5,000 years, but human race तो करोड़ों साल पहले ह्यूमन बॉडी तैयार हुई है, तब से acupuncture point है. ऐसा नहीं कि भगवान को पता था कि कोई एक्यूपंक्चर नाम का साइंस आएगा इसलिए एक्यूपंक्चर पॉइंट के होल बनाओ. इट इज नॉट. व्हाट इज एक्यूपंक्चर पॉइंट? बाय द वे, आई वाज अपॉइंटेड एज अ विजिटिंग प्रोफेसर इन चाइना एट बीजिंग मेरिडियन रिसर्च सेंटर, जहां मेरिडियन और एक्यूपंक्चर में हमने काफी सारा रिसर्च किया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि एक्यूपंक्चर पॉइंट और मेरिडियन की जो साइंटिफिक प्रॉपर्टीज है, जैसा लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, या चेंज रेजोनेंस है, या इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन है, ऑल दीज वर साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑन माय बॉडी. आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वाज इन 1987. सो acupuncture points are something like windows to our skin, and according to me, हमारे शरीर पे जो पॉइंट है एक्यूपंक्चर पॉइंट, ये सिर्फ एक्यूपंक्चर निडल डालने के लिए नहीं है. बेसिकली गॉड हैज गिवन अस एक्यूपंक्चर पॉइंट सो दैट देयर कैन बी होमियोस्टेसिस बिटवीन इंटीरियर ऑफ द बॉडी एंड एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी. एक्यूपंक्चर पॉइंट जो रहता है वहाँ स्किन का थिकनेस बहुत कम रहता है. इट इज एज गुड एज अ होल टू द स्किन. And according to me, see, nature is macrosome and our body is microsome. We are small part and parcel of the nature. Nature is mother, we are son or daughter, whatever you want. Amen. So mother और son के बीच में जैसा प्लेसेंटा रहता है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है, सिमिलर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
is through acupuncture points between Mother Nature and interior of our body. This is my thinking. Now coming to the concepts of acupuncture. Acupuncture के basic concept जो है, one is the network of meridian and collaterals. Second is Chi means vital energy. Then yin and yang and five elements. These four are most basic concepts. Now coming to acupuncture meridians and collaterals. जैसे अपने बॉडी में blood is flowing through arteries and veins. Each cell of our body is getting blood through capillaries, which are branches of arteries. Likewise, अपना जो meridian system है, 14 meridians, 12 are bilateral, 2 are midline. इनके branches होते हैं, collateral होते हैं, further और branches होते हैं, and each cell of the body is getting energy through this network of meridians and collaterals. Now, what is energy? The whole concept of acupuncture is based on acupuncture energy. Except allopathy, all other medical sciences, including homeopathy, they believe energy. Central government health ministry had invited me to in one of the meetings to discuss regarding the recognition of acupuncture, and the health secretary asked me a question, Dr. Lohiya, can you give proof of existence of energy? What is the scientific proof? Yes, जैसा अभी पहला जो लेक्चर हुआ उसके बाद भी एक क्वेश्चन पूछा, मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला कि आपका मोबाइल निकालिए जेब में से एंड टेल मी वेदर यू हैव गॉट इंटरनेट, उन्होंने निकाला, देखा व्हाट्सएप चालू है, फेसबुक चालू है, हाँ यस आई हैव गॉट इंटरनेट. मैंने बोला शो मी इंटरनेट. बोले व्हाट्सएप चालू है, फेसबुक चालू है, इसका मतलब इंटरनेट है. मैंने बोला इसी तरह आदमी जिंदा है, हिलता है, डुलता है, चलता है, काम करता है, इसका मतलब ही बॉडी में एनर्जी है. यू आर आस्किंग अस प्रूफ ऑफ टू शो एनर्जी. कैन यू शो इंटरनेट? यू कैन नॉट. कैन यू शो प्राण? आदमी जिंदा है, जिंदा और मुर्दा में फर्क क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ प्राण को हम प्रूव कर सकते हैं क्या? प्राण हम दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते. देन व्हाई डू दैट? Certain things we have to believe the existence based on the effect of that. जैसे आदमी जिंदा है इसका मतलब एनर्जी है, फेसबुक चालू है इसका मतलब इंटरनेट है, बटन दबाने के बाद फैन चालू होता है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी के हम टेस्ट में देख रहे हैं क्या, या एक्सरे में देख रहे हैं क्या? नहीं. Now coming to energy, when a child is born, he gets energy from the parents, that is called congenital chi. Chi means energy, and that is stored at point Mingmen DU4 and the two kidneys at that area. वहाँ store होती है. When a child is born, वो खाना खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, उससे जो एनर्जी मिलती है that is called acquired chi. And throughout the life, हर एक काम के लिए थोड़ी कंजेनिटल ची और थोड़ी एक्वायर्ड ची मिलके बॉडी यूज करती है. एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च पेपर, मेरा पेपर जिसके लिए मुझे चाइना में अवार्ड मिला था, कंजेनिटल ची जब खत्म हो जाए तो आदमी मर जाए. बिकॉज कंजेनिटल ची यू गेट ओनली वंस इन लाइफ व्हेन यू आर बॉर्न. एक्वायर्ड ची जो है वो तो आप रोज ही लेते हो, सांस लेते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, ये रोज ले सकते हैं. कंजेनिटल ची दोबारा नहीं मिलती है. And so, according to Dr. Lohiya, the person will die when congenital chi का store finish हो जाएगा. And this is at Mingmen. A pulse diagnosis में there is one pulse called as Mingmen pulse. If the acupuncturist is expert, by palpating Mingmen pulse, we can know कि how much congenital energy, congenital chi is left in the body. दूसरी बात, वन मोर थिंग, कई लोगों को लगता है कि एनर्जी इज फ्लोइंग ओनली थ्रू मेरिडियन. इट इज रॉन्ग. एनर्जी इज अ वेरी बिग कंसेप्ट. द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू मेरिडियंस एंड बीइंग सप्लाइड टू सेल्स, दैट इज कॉल्ड झेंग ची. द एनर्जी व्हिच कवर द स्किन, all connective tissues and shampoo organs and protects them
That is called Wei Qi or defensive Qi. It is something like aura, जैसा aura वैसा है, बॉडी को बाहर से कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है. Like that, Wei Qi is protecting. जो बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं, अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग, बैक्टीरिया एंड वायरस आर trying to attack the acupuncture points, because from acupuncture points there is easy access to the meridian. So there is a fight between Wei Qi and bacteria or virus. अगर इम्यूनिटी का, यू कैन कॉल Wei Qi as immunity. अगर Wei Qi वीक रहा, इम्यूनिटी वीक रहा, तो वायरस वहां से घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा. सिंपल. Then the energy is also flowing with blood. Chinese people never call only blood. जिंदा आदमी का जो खून रहता है, that is qi and blood, because blood is dead blood. मुर्दा आदमी का blood is blood, जिंदा आदमी का blood is qi and blood. Without qi, blood cannot function. That is called yin qi. So Wei Qi is covering the skin. Yin Qi is flowing with the blood, and that is also supplied to each cell through blood. That is called nutrient Qi. हम खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी बनती है, that is called Wu Qi. हम सांस लेते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है, that is called Qin Qi. Energy is a very big concept. अभी मेरा इंटेंशन इतना ही है कि don't think that energy is only in meridian. Energy is everywhere, and energy is the only difference between a dead body and a live body. In short, दो कार है, you have two beautiful cars. एक में पेट्रोल फुल है, एक का पेट्रोल टैंक एम्प्टी है. जिसमें पेट्रोल टैंक फुल है, there is a live person. So it is something, energy is something like that petrol, जिसकी वजह से the body काम कर सकती है. So energy is big concept. Energy, there are two aspects in energy, yin and yang, negative and positive. Yang has properties of fire, yin has properties of water. Actually yin yang ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें मैं आपको कई साल तक लेक्चर दे सकता हूँ. दुनिया में हर चीज में yin और yang है, yin yang. ऐसा एनर्जी में भी है. yin कम हो गया तो yang बढ़ेगा, yang कम हो गया तो yin बढ़ेगा. yin yang is a very big concept. In language of acupuncture, pathogen is yang and immunity is yin. So जो पैथोजन एक्सेस होता है, yang एक्सेस होता है और yin को डोमिनेट करता है, that can cause a disease. So yin yang imbalance is one of the causes of disease. Then imbalance between 5 elements is another cause of disease. According to acupuncture, the body is made up of 5 elements. Ayurveda में 5 elements है, but the concept is totally different and 2 names are also different. Actually, it has nothing to do with the 5 elements of Ayurveda. So according to 5 element theory, these 5 elements के 12 मेरिडियन को कनेक्ट करते हैं, and then these meridians are supply energy to connective tissue, sense organ, pertaining organ and couple organ. It's a big concept. Then disease can be due to obstruction in the meridians. See, हम जब ट्रीट करते हैं as a doctor or as a healer, कई लोग मुझे पूछते हैं कि what is difference between healer and doctor. मेरे जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है उनको मैं बोलता हूँ, प्लीज अवॉइड राइटिंग डॉक्टर, इंस्टेड यू कैन राइट HR, हीलर. एक ने पूछा कि सर, प्रेस वाले ने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीलर एंड डॉक्टर. मैंने कहा डॉक्टर जो दवाई देता है, पर हीलर जो हील करता है, अच्छा करता है, जो क्योर करता है वो हीलर, और जो सिम्टोमेटिकली दबाता है डॉक्टर. कई लोग, जैसा डॉक्टर बहराम जी ने बोला कि, और मैं भी हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि जो लोग मेडिकल डॉक्टर नहीं है, डोंट राइट डॉक्टर. दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि कोई भी पेशेंट डायरेक्ट अपने पास नहीं आता है एक्यूपंक्चर के पास. जब वो डॉक्टर से फ्रस्ट्रेट होता है, पहले वो सभी डॉक्टर के पास जाएगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये वो. जब वहां से थक जाता है
जब उसके मन में डॉक्टर नाम से घृणा होती है तभी आपके पास आता है. Then why are you after writing doctor in front of yourself? Avoid it. And legally it is not correct. हमारे चेयरमैन ने आपको बोला है अवॉइड राइटिंग डॉक्टर. आपको रजिस्ट्रेशन मिल गए एक्यूपंक्चर काउंसिल का, दैट डज नॉट मीन कि आप डॉक्टर लिख सकते हो इफ यू आर नॉट सो मेडिकल. अपने पास जो बीमारी आती है, नंबर 1 पेन और पैरालिसिस से ज्यादा. पेन एंड पैरालिसिस इज जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द मेरिडियन. अपना स्किन है, स्किन इज लाइक अ रोड. बिलो रोड देयर इज अ पाइपलाइन और गटर जिसमें से पानी बहता है. दिस इज रोड. इसके नीचे मेरिडियन है जिसमें से एनर्जी इज फ्लोइंग. एंड एक्यूपंक्चर पॉइंट इज मैनहोल. जैसा समझो कोई गटर में या पाइपलाइन में ब्लॉक हो गया, पानी जमा हो गया, पानी बह नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, नगर पालिका में रिपोर्ट करते हैं. वहां से आदमी आता है, मैनहोल खोलता है, उसपे से लकड़ी डाल के हिलाता है और जो ब्लॉक है उसको निकालता है. सेम थिंग. Acupuncture point is something like a manhole. Whenever there is obstruction in the flow of energy, there are many causes. Etiology and pathology of disease according to acupuncture is a very very big chapter. एलोपैथी में जनरली हम बैक्टीरिया वायरस करते रहते हैं. According to acupuncture, changes in climate and changes in emotions are rather more common causes than bacteria and virus. Anyway, so obstruction हो गया, एनर्जी इज फ्लोइंग, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो क्या होगा, जहां ऑब्स्ट्रक्शन है उसके प्रायर टू दैट ऑब्स्ट्रक्शन एनर्जी विल बी स्टैग्नेटेड एंड दैट कॉजेस पेन. इन एक्यूपंक्चर देयर इज कॉल्ड आशी पॉइंट. आशी पॉइंट मीन्स टेंडर पॉइंट. व्हाई देयर इज टेंडरनेस? Tenderness is because there is accumulation of energy there, stagnant energy there because of block in energy. और जहां एनर्जी नहीं जा रही है, जहां ब्लॉक हो गया, सपोज एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक के पहले देयर विल बी अ टेंडर पॉइंट. और इसके आगे because of lack of energy there can be tingling numbness, there can be weakness, there can be paralysis, there can be malfunction of the organ जिसको एनर्जी नहीं मिल रही. Very simple. So again I repeat, if there is a block in the flow of energy, block के prior to the block energy gather होती है, जमा होती है. In my book, I have given one name, Chioma. In my practice, I have some patients, जिसमें there was something like a tumor. According to me, that was just stagnant energy. I gave outlet to the energy and so-called tumor disappeared. I have given the name Chioma because in allopathy, Oma means tumor. And this is not a real tumor, it is stagnant energy. जो ट्यूमर जैसी दिखती है, आई कॉल इट ट्यूमर. और जहां एनर्जी नहीं जा रही है वहां पेन नहीं होगा. पेन विल बी प्रायर टू ब्लॉक. और एनर्जी जहां नहीं जा रही है, देयर कैन बी टिंगलिंग नमनेस, देयर कैन बी वीकनेस, देयर कैन बी माल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, और देयर कैन बी पैरालिसिस. बाय द वे, आपके पास मेजॉरिटी लोगों के पास जो पेशेंट आएंगे, 90% पेशेंट विल बी रिलेटेड टू पेन और पैरालिसिस. हेडेक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैकएक, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, हेमिप्लीजिया है, वेन्स स्पासिस. दीज आर कॉमन थिंग्स जो प्रैक्टिस में आएंगे, जहां आपको 5 एलिमेंट और yin yang का ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है. सो अभी जो लोग नए एक्यूपंक्चरिस्ट हुए हैं, इट इज माय एडवाइस टू देम कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ट्रीट सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, concentrate on pain and paralysis. इसका ट्रीटमेंट रिलेटिवली इजी है, because generally we have to select local points, distal points, influential points. एक फिक्स प्रिस्क्रिप्शन है. When it comes to systemic disorders,
सिस्टमिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। जैसा आंख की बीमारी, आंख इस बीमारी सिस्टमिक है क्योंकि दैट इज अंडर लिवर, कान इज अंडर ईयर, स्किन अंडर लंग। तो डिसऑर्डर्स ऑफ लंग, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ये जो है इन ऑर्गन्स, जैसा डायबिटीज है, डायबिटीज रिलेटेड टू स्प्लीन। इन सिस्टमिक डिसऑर्डर्स you have to find out the root cause of the disease. You have to find out the imbalance in 5 elements. ये 5 एलिमेंट जो रहते हैं इनमें साइकिल से रहते हैं। 2 are normal cycle which I call as physiological cycle. One is the circle, जिसको हम कहते हैं constructive cycle, and other is destructive cycle or acting cycle or controlling cycle. Wherever there is balance between the 2 cycles, so patient is normal. So what is disease? This disease is between yin or yang, or this is between 5 elements. So when you want to treat systemic disorders, you must find the root cause based on the theory of 5 elements. कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते कि सर डायबिटीज से कौन से पॉइंट दो, समय कौन से पॉइंट दो। रिमेम्बर, सिम्टोमेटिक प्रोटोकॉल जो रहता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए रहता है। फॉर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देयर इज नो प्रोटोकॉल। अगर इफ यू टेक अ केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, देयर कैन बी एटलीस्ट 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ causes of bronchial asthma, and if you want to cure, अगर आपको सिम्टोमेटिकली दबाना है, there can be a protocol. But if you want to cure, you have to find out. जैसा अस्थमा का पेशेंट है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका लंग एक्सेस है क्या डेफिशिएंट। अगर एक्सेस है तो क्यों है, डेफिशिएंट है तो क्यों है। जैसे लंग कैन बी डेफिशिएंट, सपोज लंग इज डेफिशिएंट, इट कैन बी डेफिशिएंट विद इट्स मदर डेफिशिएंट, it can be deficient because there is excess fire in the body operating on lung. It can be deficient because there is excess wood element, so excess wood counteracting on metal और lung को दबा रहा है। और there can be a disease of kidney as a root cause where we say sun affecting the mother. So like this, deficiency के causes, excess के causes और कुछ रहा तो उसके causes, and then we have to select points. So आप में से जो अभी नए नए सीख रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन पेन, ऑन पैरालिसिस। ये जो डिफिकल्ट बीमारियां हैं जैसे पीसीओडी है, ऑप्टिक एट्रोफी है, हार्ट की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारी, इससे अभी जब तक आपको इनफ नॉलेज नहीं है तब तक इससे दूर रहो। आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स दैट रामायण हैपेंड बिकॉज सीता क्रॉस्ड लक्ष्मण रेखा। I tell all my students that there are 2 Lakshman rekhas when you are practicing. One is limitations of the science which you are practicing. Then don't think that acupuncture is a panacea and it can treat everything. No medicine. It may be allopathy, it may be anything. I was asked this question in a foreign press conference, which is the best system of medicine, which is best pathy. They thought I may say allopathy or acupuncture. I said neither allopathy nor acupuncture. Curopathy is the best pathy and it should be supported with sympathy. Curopathy and sympathy. यानी पेशेंट को जो है, समझो मान लो पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और उसको सर्जरी करना जरूरत है तो सर्जरी ही करना पड़ेगा। That time that is the best pathy. और पेशेंट को कुछ XYZ है जो होम्योपैथी से अच्छा हो सकता है तो for that curopathy is होम्योपैथी. And most important is sympathy. Doctor should have sympathy with the patient. क्योंकि ये ध्यान में रखो, पेशेंट अपना अन्नदाता है। इन्हीं को कि हम पेशेंट को उपकार कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। पेशेंट आपको उपकार, आप पे उपकार कर रहा है, आपका घर चला के आपको रोजी रोटी दे। Why I am telling cause of disease? Because when a patient will come to you, patient will have first question: how a drugless therapy? Yes, Dr. Lohiya, I would like to listen to you further. There is some little interest. हमारे चीफ गेस्ट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ही हैज जॉइंड, तो उनका आशीर्वाद लेना, उसके बाद we will continue with you, sir. Okay. So can we intervene for just 2-3 minutes? Okay.